Now we have came to question number 5, 2.4, factorize. This is the last question of this exercise, but there are 4 more questions. So one by one we will take. These are quite difficult, quite confusing. What you have to do, I'll tell you one by one. Follow that. See the video twice, thrice in your free time, and you'll be able to solve this type of a question. Okay. So factorize. As I told you, if cubic equation is there, then 3 factors are going to come. So let us see what are the 3 factors. Okay, but we don't have anything. Long division, for example, if you are dividing 24 divided by 6, so 24 को divide करना है, 6 is there. उन्होंने कहा कि 24 को divide करो 6 से. Here they haven't said anything about this कि इसको किससे divide करना है. So that also we have to find out. So let us see how to find out कि हमको किससे divide करना है. Okay, now possible factors of 2. अब ये लास्ट में जो है this 2, we have to find out the possible factors of 2. तो 2 के factors निकालेंगे. What are the possible factors of 2? Plus 1 plus 2 are the factors of 2. अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू रख लेंगे हम लोग. Let us say x is equals to 1. This means what? These values we have taken. Okay, so this means what? Let x is equals to 1. Okay, so this is the value of x. This is the another value. I have taken 1, you also could have taken 2. Because it is a factor, तो उसका आंसर 0 ही आने वाला है. For example, again 24 divided by 6, ये फैक्टर है उसका, है ना. 6 4 are 24, तो रिमाइंडर 0. So this means that if it is a factor, these two are factors, then remainder if we divide will get 0. तो इसको हम divide करेंगे, हमको 0 मिलेगा. तो we will check that also. So now to check, we will put x here. P of 1 is equals to 1 cube minus 2 into 1 square minus, instead of x 1 is there, plus 2. So what I will get? 1 cube is 1 minus 1 square is 1, 2 into 1 2 minus 1 plus 2 plus 2 minus 2 plus 1 minus 1 cancel 0. So this means what? Therefore x is equals to 1 is a factor. X is equals to 1 is a factor, और ये अब फैक्टर हो चुका है. So which implies, अब इसको मैं इधर लेके आता हूँ. x 1 पॉजिटिव है, इधर आ गया minus 1 is equals to 0. x minus 1 is equals to 0 is also a factor. अब ये मिल गया मुझको. Now I will do what? I will factorize now. I will divide complete this by this x minus 1. Let us see how, which is very important. I may write it in small handwriting, but I will speak also so that you can understand. x minus 1, correct? इससे डिवाइड करना है. किसको? इसको डिवाइड करना है. तो I will write it p of x, x cube minus 2x square minus x plus 2. Correct? You can see it very properly. What I did, पहले सबसे पहले possible factors of 2. I got these 2 factors. उसमें से मैंने एक लिया, कोई भी एक, आप ये भी ले सकते हैं. I have taken this and then I have put it here. I got 0. That is why it is a factor. Therefore x minus 1 is a factor. तो मैं इससे उसको डिवाइड कर दूंगा. Correct? Now again I will repeat with the same example. 24 6 से डिवाइड करना था, तो 6 हमको मिल गया है. x minus 1 is 6. Correct? Now we want this also and we want remainder also. Quotient also and remainder also. So we will see how to get that. First of all, one most important thing is to find the quotient. The rough work should be here, only here. Okay, I will do it here. I don't have that much space, but I will try to do that. Okay, so the first step is we have to take this value x cube for first quotient. Okay, first quotient x cube divided by this. इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय x. नाउ x क्यूब अपॉन x इज व्हाट? x क्यूब अपॉन x इज x स्क्वायर. ये ऐसा है वो. x क्यूब मतलब x इंटू x डिवाइडेड बाय, सिर्फ एक ही x है तो एक x, ये कैंसिल हो गया, बचा x इंटू x स्क्वायर. सो आई गॉट x स्क्वायर. करेक्ट? सो आई गॉट x स्क्वायर. अगेन आई एम सॉरी. So now
I got x square, so I will write this x square here, x square. Okay, now what? Multiply this x square with this complete term, complete x और 1 को भी मल्टीप्लाई करना है. x square into x, x cube, x square into -1 minus x square, minus x square. माइनस डिवीजन में होता ही है ऑलरेडी. Now we'll go again further. Remember this thing. This should be always in the standard form wherever you write that. Suppose x cube के बाद सिर्फ x दिया रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया रहता, तो you have to write 0x square. Okay? I wish that I hope that you know this. Now x square से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, we got this. Now x cube minus x cube 0, so this will get cancelled. अब माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये माइनस will become plus. Now we will see this x square as plus. अब इसको हम ऐसा नहीं देख सकते, हम उसको देखेंगे प्लस के तरीके से. So minus 2x square plus x square. देखो यहाँ पे minus 2x square plus x square. What I'll get? Minus 2x square plus x square. मतलब दो x square में से एक x square चला गया, but minus sign is there, इसलिए एक x square बचा, तो minus x square. Minus x square. दोनों में बड़ी साइन इसकी है, इसलिए we have taken this. Minus x square. ये तो कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा. करेक्ट. नाउ विल गो फॉर सेकंड क्वेश्चन. अब दूसरा क्वेश्चन ढूंढना है, इसलिए आई राइट ये सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी फर्स्ट दिस वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स. अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा. आई विल राइट विथ माइनस एक्स, सो आई विल राइट माइनस एक्स हियर. माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू -1 प्लस एक्स. अगेन साइन यहाँ माइनस ही होता है, तो दिस माइनस विल बिकम प्लस, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस प्लस माइनस. नाउ आई कैन सी दिस एक्स एज माइनस. और माइनस एक्स कितना होगा? -2x, -2x प्लस 2. करेक्ट. नाउ विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन. आई गॉट थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन के लिए फिर से मैं ये वैल्यू लूंगा, -2x डिवाइडेड बाय this x. X will get cancelled. I left with -2 only, so I will write here -2. -2 into x, -2x, -2 into -2, -1 plus 2. Correct. यहाँ माइनस होता है, this will get cancelled. Plus 2 minus 2 minus 2 0. This is also get cancelled. So what I left? अब मेरे पास बचा सिर्फ 0, मतलब remainder is 0. This is the another factor. But as I told you that we will get 3 factors. अभी तक के हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है. We get 3 factors. This is one and this is the another one. But this is quadratic equation. This also can be factorized. So we will factorize this also. Now I don't have space, so I will rub this. You can just repeat the video for writing this. Now I rubbed. Now what I have got. See. P of x पॉलिनोमियल क्या था पहले? सबसे पहले द फर्स्ट पॉलिनोमियल वाज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर सॉल्विंग ये डिवाइड हो चुका है दो, इसमें इसको डिवाइड कर मतलब इसके दो पार्ट हो गए. विच आर द टू पार्ट्स? x माइनस 1, क्योंकि हमको एक फैक्टर मिल गया था, और ये एक फैक्टर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. करेक्ट. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस 2 यू विल गेट दिस, बट वी वांट 3 फैक्टर्स. एक तो हमारा हो गया, दिस वन इज डन, x माइनस 1. करेक्ट. नाउ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी कैन सॉल्व दिस. 2 into 1 2 -2 के फैक्टर. नाउ व्हाट विल डू? 1 1 जा 1. करेक्ट. 1 1 -1 plus 1. Suppose I will do like this. So -1, pardon, I want 2. So 2 1 जा 2, like this. 2 1 जा 2. I want -2. And I want -1 also. So this is minus and this is plus. Now see, multiply this. 2 into 1 2, minus sign is there, so 2. -2 plus 1 -1. So -1 is also there. So instead of x, this we will write x square. This is all the splitting the middle term that we have seen in the previous video. -2x plus x minus 2. Now I will just make pair here as it is, x square. So x will be common, x minus 2. If you multiply this you will get this, plus x minus 2 already is there, कुछ भी नहीं निकाला, मतलब 1 निकाला हमने. So now
x minus 1, x plus 1 and x minus 2 are the three factors. As I told you, if the equation is cubic, you will get three factors. So here are the three factors. In this way, we have to solve all the other problems also. Okay, thank you.